Okay, now we are going to do with this trade, commerce, and industry. So start with the meaning of trade first. Trade क्या होता है? Basically, trade is the act of exchanging goods or services for other goods or services. Trade is typically done between two parties and can be done either directly or indirectly. So basically, trade is an important part of the economy and can be a driver of the economic growth. Obviously, economic का important part तो होगा क्योंकि इसका मतलब ही कि exchange of goods and services. Without exchange of goods and services, there is no money. Obviously, there is no growth in the economic. So basically, trade can also be a source of conflict and can be used as a tool of economic welfare. So basically, trade की definition है कि trade is the process of exchanging goods or services between two or more parties. It can be between individuals, between businesses, between countries, and so on. जो पर्पस है वो ट्रेड का ये है कि is to obtain something that is desired or needed by one party in exchange for something that is desired or needed by the other party. Automatically understood है कि क्या डिजायर्ड होगी सेकंड पार्टी की? मनी, कि आपने उनको गुड्स एंड सर्विसेज दिए, इन रिटर्न आपने उनसे मनी लिया. ठीक है. So basically, trade is an important part of the economy and the society. It allows people and businesses to obtain what they need or want without having to produce it themselves. So trade also promotes competition and helps to keep prices down. तो ये था आपका ट्रेड. और अगर हम कॉमर्स की बात करें, कहीं ना इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं. अब कॉमर्स को ध्यान से समझना. कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन between companies, individuals, and societies for the mutual benefit. So basically, it is also an economic transaction whereby two parties agree to exchange, usually via a financial transaction. जो मैंने अभी बोला कि कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं? Via financial transaction in return of money. So company runs its business in a specific way, and its purpose is to make a profit in exchange for the goods and services it produces. That is commerce. अब देखा जाए अगर से क्या क्लियर हो रहा है कि कॉमर्स करना कहीं वाइडर टर्म है और ट्रेड इससे नैरो टर्म है. तो कॉमर्स जो बेसिकली इट इंक्लूड्स ट्रेड. दिस पॉइंट बीइंग हाइलाइटेड कि जो कॉमर्स है इट इंक्लूड्स ट्रेड, बट ट्रेड डजंट इंक्लूड कॉमर्स. बट ट्रेड डजंट इंक्लूड कॉमर्स. क्यों? क्योंकि ट्रेड में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. कॉमर्स में ट्रेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, services and information via financial transaction. That is commerce. So next line, commerce covers all the activities related to buying and selling of goods and services. Next आता है आपका, ये था commerce और वो था trade. Now industry. अगर हम इंडस्ट्री की बात करें so industry is a word that can be used in a variety of ways. It can refer to a sector of the economy. Industry can be referred to a sector of economy. कैसे? कहीं ना कहीं manufacturing industry. It can also refer to a type of work such as fishing industry, or it can also refer to a place where a particular type of work is done, that is an industrial park. कि इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन के लिए उसने बोला कि कहीं ना कहीं इसको तीन तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. कैसे? वैरायटी क्या है कि फर्स्ट अगर उनको सेक्टर के बेसिस पे देखें इकोनॉमी के, तो उसको ऐसे बाइफरकेट किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री. और अगर टाइप ऑफ वर्क के बेसिस पे देखा जाए तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ फिशिंग इंडस्ट्री, पोल्ट्री फार्म्स. ठीक है. और अगर हम इसको पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क के बेसिस पे देखें तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एज एन इंडस्ट्रियल पार्क. तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ इंडस्ट्री. ओके. सो ओके, आगे चलते हैं. बट व्हाट डज द इंडस्ट्री मीन?
जो word industry है, it comes from the Latin word industrial, which means of or belonging to a work. And that is really what industry is all about, work. It's about people coming together to do a particular type of work, whether it is making cars or growing crops. Okay. So industry basically is an important part of an economy. That is what provides the goods and services that people need and wants. And it's what creates job for the people to do. Now, so when we talk about the meaning of industry, we are talking about the meaning of work. जैसे उन्होंने बताया कि इसका मीनिंग क्या है, इंडस्ट्री का बिलोंगिंग ऑफ वर्क, कि आप किस वर्क से बिलोंग करते हैं, दैट इज इंडस्ट्री बेसिकली. So and there is something that each of us has to figure out for themselves. Now, अगर अब मैं डिफरेंस की बात करूं, अभी हमने समझा क्या इंडस्ट्री होती है, क्या कॉमर्स होता है और क्या ट्रेड होता है. ओके. So this is the difference between the trade, commerce and industry. अभी इसका स्किप भी हुआ है तो ये क्लियर, मैं दोबारा से डिफरेंस समझा रही हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा वापस से. नाउ अगर डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट मीनिंग, ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, ट्रेड रेफर्स टू द एक्टिविटीज ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट पीपल्स और बिजनेसेस. कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजुअली ऑन अ लार्ज स्केल. इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज. ये तो ही डेफिनेशन जो भी हमने ऊपर डिस्कस की. सेकेंड मोड ऑफ डिफरेंस जो आता है वो है इंपॉर्टेंस. अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड इज वाइटल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मीनिंग ये क्या है. कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स इज एसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन. तो वी कैन राइट है. और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री इज नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. Okay, so third mode of difference देखें तो that is types. Types में क्या करेंगे, basically it can be divided into two main categories. Local trade, which refers to trade within a country, और foreign trade की बात करें तो trade between the country. There are two types of trade, local within a country, foreign trade मतलब trade between countries. अब आते हैं हम कॉमर्स पे. कॉमर्स की टाइप्स की बात करें, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, डोमेस्टिक ट्रेड विच इज विद इन अ कंट्री, एंड इंटरनेशनल कॉमर्स विच रेफर्स टू अ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है. और अब इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, दैट इज फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या काम होता है, ये हम शायद 11th-12th में पढ़ चुके हैं. इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, लाइक जैसे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह जो है ना, वो एग्जांपल्स इसमें आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में. और अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी का क्या काम होता है, द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. So here are the types of trade, commerce and industry. Now, fourth mode of difference की बात करें, that is scale. Trade basically happens on a small scale. मैंने ऊपर डिस्कस किया कि trade कहीं ना कहीं narrow term है. It happens on a small scale. Commerce is a large activity and includes ट्रेड एंड इंडस्ट्री बोथ. मतलब कॉमर्स इज अ वाइडेस्ट टर्म जिसमें ट्रेड भी आता है और आपका इंडस्ट्री भी आता है. और इंडस्ट्री का क्या बेसिकली काम है, डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ऑन द लार्ज स्केल, दैट इज इंडस्ट्री. अब आता है लास्ट मोड ऑफ डिफरेंसेस, एग्जांपल. ट्रेड बेसिकली इंक्लूड्स रिटेल, होलसेल एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. Commerce includes activities such as marketing, transportation and financing. और इंडस्ट्री की बात करें तो it includes agriculture, mining and manufacturing. So these are the examples of
ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो लोगों okay, so this is that you can take from here. Wait. So basically, this is the difference between trade, commerce, and industry. Okay. So next topic we are going to do today is अभी हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, काइंड ऑफ सर्विस इंडस्ट्री. So there is a question over here कि what are the reasons for the growth of service sector? आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है वो है सर्विस सेक्टर. तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? तो अगर हम इसके रीजंस डिस्कस करें, द फर्स्ट रीजन इज इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग. If everybody is listening, so you can write down the points जो मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा स्पीड से, और बाकी एक्सप्लेनेशन आप सुनोगे. The reasons for the growth of the service sector is first is economic planning. अगर इकोनॉमिक प्लानिंग की बात, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च लाइक 5-year प्लान उन्होंने किया था 1951 में टू अचीव द रैपिड ग्रोथ ऑफ द कंट्री. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, कम्युनिटी सर्विसेज एक्सेट्रा. So therefore, these sectors have expanded rapidly in the country. Second point की बात करें, increasing urbanization. Increasing urbanization. Increasing urbanization. अगर हम urbanization की बात करें, तो urbanization has been another cause of expansion of the service sector in industry. There has been shifting of population from rural to the urban areas. So urbanization leads to rise in demand for the infrastructure services जैसे कि communication, public utilities and distribution services. Third point की बात करें, reason for the growth of the service sector is media. Television, internet, other media have led to spurt in tourism. So modern technology has made business more profitable and more comfortable. Tourism in turn has promoted all types of services such as hotels, restaurants, travel agents, amusement parks, even management, etc. So expanding world trade has also led to a demonstration effect. That is the power of media. Fourth बात करें तो rise in per capita income. The fourth point is rise in per capita income. कि growing per capita income has led to demand for new and better services. Interior decoration, garden care, slimming centers, health clubs, etc. are the examples of these sectors basically. So more leisure time, leisure मतलब होता है खाली time. So more leisure time creates demand for the recreation and the entertainment services जैसे कि water parks etc. Next point की बात करें, fifth point is women workforce. Women workforce.
कि higher percentage of women in the workforce has created demand for the babysitting, household care, domestic help, and such other personal services. So this is also the reason for the growth in the service sector. Sixth point is greater life expectancy. The increase in lifespan has led to greater demand for healthcare and related services. Greater concern for ecology and resource scarcity requires time sharing, pollution control, and other services. Last point बात करें, that is growing complexity. Growing complexity कि जो specialist है are required for maintenance of computers, air conditions, and other complex products. So with increasing complexity of modern industrial organization, manufacturing sector requires more accounting, finance, legal, public relations, and such other services.